Okay, so good evening to all of you. It's almost 4 p.m. in the evening and this is Saturday's evening, weekend. You guys must be enjoying, and today I have come with a very interesting topic of all the Royal Enfield guys. And yeah, from the title you already know that it is BS4. So yes, there is a lot of many news are going on. BS4, BS3. What is actually BS4 and BS3? So BS is basically Bharat stage. So these are very famous nowadays. And today I'm going to tell you what are the difference between BS4 and BS3. For that I'm taking an example of classic 350 bike. So let's go and just check it out. What is actually BS4 and what are the things that the company has given in BS4 models. So let's just check it out. So as you can see, this is classic 350. This is Royal Enfield classic 350. Let me tell you what are the additional features that the Royal Enfield has added. This is the ignition switch, and there you can see there are no switches of the lights. So this is the features of BS4, because your light will always be on in this BS4 models. You can see अभी मैं इसको on करने लगा हूँ, then you can see the lights. So there you can see. So the light automatically gets on as you start the ignition of the bike. So this is the feature of BS4 model. So light off नहीं रहेगी. इसका reason ये है, the reason behind this is because all the super bikes, all the bikes are जितनी भी हैं इन सब की लाइट्स ऑन रहती है. तो इसका ये रीज़न है कि डे लाइट में भी और दिन में भी लोगों को दिखता नहीं कि बाइक आ रही है दूर से नहीं आ रही है. तो इसीलिए ये लाइट ऑन रहेगी हमेशा, सो दैट ईच एंड एनीवन कैन इजीली एक्सेस वेदर द बाइक इज़ कमिंग और नॉट. सो इफ़ यू हैव सीन हायाबुसा, हार्ले डेविडसन, सब की लाइट ऑन ही रहती हैं. तो यू कैन ऑल्सो एड अ स्विच ओवर हेयर फॉर द लाइट, बट just remember there is a challan of ₹5,000 if you add any additional switch on the BS4 models. BS4 model पे कोई भी additional switch लगाओगे लाइट के लिए तो there is a challan of ₹5,000. So please guys don't do this. ये जैसा है वैसे ही परफेक्ट है, बिकॉज लाइट हमेशा ऑन रहनी चाहिए. तो आप लोगों को भी ईजी होगा, एंड जो भी आपके आगे होगा, जो भी आपके पीछे होगा, इट विल बी वेरी एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. सो दिस इज़ द मेन फीचर. सेकेंडली, एज यू कैन सी द बाइक का स्टैंड जो है ये लास्ट जो BS3 मॉडल्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल मेटल का था. अब ये काफ़ी सही से दे हैव मॉडिफाइड इट टू वेरी गुड मेटल, एंड इट्स वेरी, as you can see, it's very hard, it's very solid, because many of my friends also complain कि classic में इतना सही ये side stand नहीं है. So they have now given a side stand, better side stand. This is not in only BS4 models, in any of the models. So side stand is also good. So this is the second specification of the BS4 model. Now one of my brother who is very technical in Royal Enfield showroom, Charanjit. So hello, hi. So he will explain each and every the technical thing, because I'm not strong. So he will tell all of us that actually BS4 में क्या चेंजेस किए गए हैं कंपनी ने. So let's start. ये सर इसमें एयर के लिए पाइप दिया गया है जो पहले BS3 में नहीं था, और BS3 में ये वाली एयर पाइप या जिसमें टंकी में पहले एयर की प्रॉब्लम थी. तो उसको कंपनी ने ये सॉल्व आउट करने के लिए एयर का पाइप दिया गया है. इसमें आप इस टैंक को आप मैक्सिमम 10 लीटर तक फुल करा सकते हैं. इससे अबव अगर आप कराएंगे तो इसका ये कनेस्टर यहाँ पे दिया हुआ है. अगर आप 10 लीटर से अबव इसमें पेट्रोल डलवाते हैं तो ये सीधा कनेस्टर में जाएगा, और ये आपका कनेस्टर ये ख़राब हो जाएगा. तो फिर ये आपको चेंज करवाना पड़ेगा. तो आप मेक श्योर कि आपको 10 लीटर ही डलवाना है पेट्रोल, इससे अबव नहीं डलवाना. सो एज यू कैन सी दिस इज़ ये जो एक वाइट कलर सी पाइप है, दिस इज़ व्हाट यू आर टॉकिंग ना. Yes. यही है ना. हाँ, तो ये इसलिए दी हुई है. हाँ जी. अगर आप इसको मैक्सिमम पूरा ऊपर तक टैंक फुल करा देंगे तो वो फिर इस पाइप में पेट्रोल चला जाएगा, और वो फिर डायरेक्ट सीधा आपका कैनिस्टर में. सो बेसिकली ही इज सेइंग यू शुड नॉट पुट मोर देन 10 लीटर्स इन द टैंक, just to avoid because petrol should not touch the air pipe which is available in the tank. So just make sure guys 10 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल ना भरवाएं क्लासिक में, ठीक है, क्योंकि अगर एयर नहीं बनेगी टैंक में तो फिर ये प्रॉब्लम दिक्कत करेगा. मिसिंग की प्रॉब्लम आएगी अगर आपने 10 लीटर से ज़्यादा तेल भरवाया, ठीक है. BS4 इसलिए लॉन्च किया गया इंडिया में क्योंकि इसमें पोल्यूशन कम है. सो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है. सो दिस इज़ द एयर पाइप, एज यू कैन सी
अब या एज यू कैन सी दिस इज़ द पाइप. सो यहाँ से सारा पोल्यूशन निकलेगा जितनी भी पूरी गाड़ी का, ठीक है. सो ये इसलिए लगी हुई है ताकि तुम्हारा पोल्यूशन कम हो. बेसिकली जितनी भी वॉल्स यू कैन सी all the walls are here just to reduce the pollution. So that is why the BS4 model comes in the country. So basically in the BS3 model there were only 2 filters, one in the bent pipe and one in the silencer. Now in the BS4 model there are 2 filters in the bent pipe and one in the silencer. So जितने एयर फिल्टर ज़्यादा होंगे उतना ही आपका silencer की आवाज़ कम होगी और पोल्यूशन कम होगा. तो क्योंकि जितना आपके फ़िल्टर लगे हैं एयर में, तो जितना भी बाहर से कूड़ा आएगा या बाहर से जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा वो उसको फ़िल्टर करके इंजन तक पहुँचाएगा, सो दैट आपका इंजन में कोई प्रॉब्लम ना आए. सो बेसिकली BS4 मॉडल में इसीलिए इसको यूज़ किया गया है. आई हैव अ पेम्फलेट ऑफ BS4. देयर आर सम नंबर दैट you should not bother about that, but you should know about these numbers. This is the carbon monoxide has to be 0.590, hydrocarbon has to be 0.225. Then there is fourth option, NOx if applicable is 0.265, HC plus NOx if applicable is 0.497. These are just the data that I'm just showing you. These are not that much important to you, but from technical point of view this is very good. Thumbs up. So this is BS4 Bharat stage 4. So BS basically means Bharat stage. This is the pamphlet that I have. Another thing I want to tell you that for diesel and vehicles the BS4 is not applicable. This BS4 is applicable only for petrol vehicles. As you can clearly see, this is only for petrol vehicles, and for diesel vehicles it's not applicable. So this is the difference. And what are all the specifications that I have given you in this video are basically only for BS4 models. Sound थोड़ी कम होगी silencer की. There is a bit decrement of the silencer sound of Royal Enfield bike, but you can attach any silencer on this Royal Enfield bike. There is no problem in that. And also please do not mount the extra switch because there is a challan of ₹5,000 as told by the technician over here. So please don't do this. So you have seen in the video till now that what are the difference between BS3 and BS4 models. And BS4 is really good because it's helping in reducing the pollution that is on the roads, and because there is a lot of pollution on the roads, and it's not possible for all of you to even drive on the roads, because in the last Diwali also you have seen the pollution is too much. So that is why the government has taken a very good initiative step of implementing BS4 models in India. So I've already given you the specifications of the BS4 models, that what are the things that they have given us. So if you have liked the video, please do hit the like button, and if you haven't subscribed to the channel till now, please do subscribe the channel, because many more videos to come in the channel. And don't worry, you can mount any silencer on the BS4 models. It's not gonna affect the fuel efficiency. It depends on which silencer you are adding. I've already given the silencer reviews in my channel, so if you have doubts which silencer you should go, there are 3 silencer reviews in my channel: Dolphin, Shark and Wild Balls. You can check out the videos in the channel. So if you have any questions, please comment down below. I will definitely answer you. So thank you so much for watching this video. Please do subscribe if you haven't, because subscribe करने से you'll get the notification when I will upload a next video. Bye, take care and stay happy, stay safe, ride safe. Thank you so much.